हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए ट्वेल्थ के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें ट्वेल्थ में फिफ्थ चैप्टर ओवर। नाउ टुडे सिक्स चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट। सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हेयर इन द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, what is the main thing? Main thing, applications means questions, basic life, in general life or in any technical life. Some mathematical statements are there like that. One function, one quantity. Function means relation between two quantities. That is called function, and function means that you know relation, but that relation what is the unique relation means one quantity what is independent, that is x, and which dependent, that is y. So y is equal to fx. You know y quantity is equal to any relation in the quantity x. X quantity is called the independent quantity and y is depend on x. जैसे कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है? इट इज़ इन 10th क्लास, 9th क्लास also. Okay, what example? Let us suppose I am saying that the length of a rectangular plot is 1 centimeter more than the twice of its breadth. So in this sentence, two quantities are there, length of the rectangular plot and the breadth of the rectangular plot. So according to my this statement, which quantity is independent quantity here? X independent is breadth, that let x. Y independent, you see that y means length is 1 centimeter more than the twice of its breadth. So it means breadth is independent but length is dependent on the breadth. So let the breadth, it means that is x quantity independent. Let x breadth, then length will be अदर क्वांटिटी. तो ये एक फंक्शन बन गया लेंथ के लिए. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, इट इज वन रिलेशन इन द एक्स इफ एक्स इज द ब्रेथ. तो ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ एंड 1 centimeter मोर, देन लेंथ इज इक्वल टू 2x. फ्रॉम माई एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 2x plus 1. This 1 centimeter more the twice of breadth. If breadth is x, तो length is this. लेंथ निकल गई. तो मीन्स ये एक फंक्शन बन गया. दिस इज द फंक्शन इन द क्वांटिटी x रिलेशन, दैट इज 2x plus 1. ओके बेटा, understand, this is one function and this is called length. Okay, the value of the function is called the y. This. Okay beta, this general I given to you one example. Like that many examples are there in our daily life also. Situation anywhere, in any field, other fields also, economical field also, technical field, engineering also, using of these
types of two quantity. It means here what is rate of change of quantities. Rate of change of quantities. What is the meaning of the rate of change of? If it is y1 at x1, value x1, and if x is changed and after changed it is x2, any value other, x की वैल्यू x2 है, एनी अदर वैल्यू है, चेंज हुआ है x1 से x2, तो ये y2 है लेट. इफ, ठीक है बेटा. देन व्हाट इज द चेंज? मीन्स सब्ट्रैक्ट. मीन्स चेंज मीन्स सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन 1 and equation 2. If we subtract both, so what will come? y1 y2 second minus first, y2 minus y1 is equal to, what is that? fx2 value, this is y2 value fx2 beta, fx2 minus fx1. Okay, understand this. Okay, so now you see here what is the change. This is the change in the y. पहले y1 थी वैल्यू, फिर y2 हो गई, तो y2 माइनस y1, दिस इज चेंज, एंड चेंज इज कॉल्ड द dy, डिफरेंस इन द y. ओके, डिफरेंस इन द y बन गया. ये y मीन्स फंक्शन, फंक्शन में डिफरेंस हो गया. दिस इज fx2 माइनस fx1, दिस इज कॉल्ड dy. तो dy इज इक्वल टू चेंज. नाउ दिस इज द चेंज fx2 माइनस fx1. ओके, तो नो रेट ऑफ चेंज, रेट मीन्स रेट ऑफ चेंज मीन्स डिवाइड बाय द चेंज दैट. तो इफ डिवाइड बाय द चेंज ऑफ x, x means dx, means dx is, what is dx? Change in the value of x, x2 minus x1. This is the change in x. So if x is increasing from x1 to x2, यानी x2 is greater, if x2 is greater than x1, इंक्रीज हो रहा है, x2 इंक्रीज हो रहा है, एंड जब वो इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो, एंड y2 आल्सो ग्रेटर देन y1. इफ कंडीशन, देन व्हाट वी कैन से पॉजिटिव, यानी dy अपॉन dx rate of change in both will be positive, greater than 0. Understand this. If both are increasing, x also increasing as well as function value y also increasing, then we can say rate of change of the function dy by dx is positive, greater than 0. Okay, means positive. But if in any one relation like this possible, like this, if you are increasing the x but y is decreasing, if you increasing the value of x, तो y is decreasing, then like this rate of change of the function will be negative. Okay, तो ये तो फर्स्ट केस हुआ बेटा. सेकंड केस, if
x2 greater than x1 but y2 डिक्रीज हो गया, y2 लेस देन y1। ठीक है, x2 इंक्रीज हो रहा बट y1 डिक्रीज हो गया। ओके, तो देन व्हाट विल बी रेट ऑफ चेंज? देन dy by dx this will be less than 0, means negative। ओके, और ये मीन्स पॉजिटिव। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, कीप इन योर माइंड रेट ऑफ चेंज फिनोमिना। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? ये तो एग्जाम्पल ये है जैसे मैंने आपको दिया था लेंथ वाला, एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ भी इंक्रीज होगी रेक्टेंगल प्लॉट में। बट इफ एग्जाम्पल लाइक दैट कि एनी फंक्शन in the variable x is equal to 5 minus 2x. If this, then you see if x you are taking first x1, you are taking 2, x2 you are taking 4. If यानी x2 ग्रेटर देन x1, तो पुट करा वैल्यू क्या बनी? y1। तो y1 मीन्स fx1 पुट किया, y1 x1 पुट किया, तो 5 माइनस 2 2 जा 4, 1 बन गया। 5 माइनस 4 2 2 जा 4। और y2 क्या बना? y2 देखो, इफ x2 4 पुट किया, x2 4। ठीक है, ये देखो ये x2 तो इंक्रीज हो रहा बट यहाँ y2 क्या आएगा? 4 2 जा 8, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 माइनस 3। अंडरस्टैंड दिस। तो इन दिस एग्जाम्पल y2 क्या हो गया यहाँ पर? दिस इम्प्लाइज y2 लेस देन y1 बट इन दिस x2 greater than x1. So for this example, this second case x2 greater than x1 but y2 यहाँ कैलकुलेट किया फंक्शन में तो ये लेस देन बन गया। इट मीन्स इट इज सेकेंड केस, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज फॉर दिस फंक्शन विल बी नेगेटिव। ओके, तो आई टोल्ड यू द रेट ऑफ चेंज sign, where will be positive, where will be negative, and rate of change, understand definition, that is the change of the function in respect to the change of the x. X is one quantity which called the independent and y is the quantity which is dependent on the first quantity, that x. तो independent is x always we are taking and dependent that function y. Okay, so everywhere you use here the derivative, rate of change of the function is called the derivative. You know dy by dx is called the derivative. Okay, so this is the 1 2 example. Understand, according to these two examples I given, it is clear that the rate of change of the function is called the dy by dx, and dy by dx you know is called the derivative. So other name of the derivative is rate of change of quantity in any relation between two quantity where that is the function. Okay, so this is the introduction of this application of derivative. Chapter is application of
derivative. So now first question, what is question number 1 in NCERT book exercise 6.1. So this question is find the rate of change of the area. Understand application start. Rate of change of area of a circle. So rate of change of area is the any one y, it means y function of a circle. तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर. तो ओरिजिनली पाई आर स्क्वायर एंड ए लेट ए एरिया ए दैट इज फंक्शन वाई इन वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट आर. तो अकॉर्डिंग टू द रेडियस आर इफ चेंजिंग देन एरिया विल चेंज. ओके, so like this you understand with respect to its radius. तो respect किसके, radius. तो respect means that is independent is here radius. in the radius के respect में ही area का rate of change find करना है, यानी change in the area in respect to the radius. तो dA upon dr we have to calculate. तो when first part r is equal to 3 centimeter, b r is equal to 4 centimeter, then you calculate dA upon dr. Okay beta. तो then according to question number 1 solution, understand the area of circle let A is equal to पाई आर स्क्वायर. तो अब ध्यान देंगे हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स डेरिवेटिव वी हैव टू कैलकुलेट. वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड द डेरिवेटिव. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर टू कैलकुलेट डी ए अपॉन डी आर. तो डिफरेंशिएट विद respect to r, in respect to r is the independent quantity here. ठीक है, इसको अगर चेंज कर रहे हैं r को तो उसका एरिया में कितनी चेंज आई ये हमें कैलकुलेट करना है. इट मीन्स उसका हमने वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द a फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू r, dA बाई dr. ठीक है बेटा, dA बाई dr with respect to r, rate of change with respect to r. तो then differentiate with respect to r square power formula x power n 2r. तो 2 पाई is constant, तो 2 पाई r. डन बेटा, ये हो गया. अब इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी है रेट ऑफ चेंज with respect to area, rate of change of area with respect to radius at r is equal to 3. तो here r अगर हम 3 पुट कर देंगे तो हमारा चेंज आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल here 2 पाई r is 3. तो कितना बन गया, 3 2 जा 6 पाई. सो दिस इज आंसर. This is rate of change of area means here if 3 सेंटीमीटर था तो क्या बन गए, ये है रेट ऑफ चेंज. तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, देन सेंटीमीटर बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर. डन. तो रेट ऑफ चेंज दिस इज हेयर if increasing radius तो a also increasing then positive. okay beta, clear. now second part r is equal to 4 you can put here, then 4 to 8 pi will come. done. now question number 2, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. increasing का मतलब change of volume, rate of change of volume positive. तो means x वॉल्यूम किस पर डिपेंड है. क्वेश्चन नंबर 2, increasing volume given, rate of change of the volume given.
Question number 2, according to question, what is given? Rate of change of volume. Volume, let V. Rate of change of volume given centimeter cube per second. Per second means respect to the time. Understand? This given centimeter cube per second. 8 centimeter cube per second is mean time, with respect to time. Volume changing given. How fast is the surface area increasing? How fast surface area is increasing? अब क्यूब है, क्या है फिगर? क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम लेंगे हम, ठीक है. सॉल्यूशन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब? फंक्शन वी हैव टू राइट. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बोलो. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, साइड पावर 3. तो लेट साइड इज ए, let side is a power 3. let side x भी ले सकते हैं इसको. let side of cube, ठीक है बेटा. let side of cube इज इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं हम, यहाँ एक्स कर लेंगे. ओके बेटा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. इंडिपेंडेंट, ऑलवेज वी हैव टू टेक एक्स. जनरली वी आर टेकिंग लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स. सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गया तो सेंटीमीटर, सो देन दिस इज वॉल्यूम. ओके, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter. surface area increasing find करना है. ओके, how fast is the, यानी dA upon dt we have to find, but first we have to find that dV by dx. okay, so this is your volume given, then differentiate this dV by with respect to t. देखो t नहीं है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. हेयर राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज गिवन हेयर विद रिस्पेक्ट टू t वॉल्यूम, दैट्स वाई विद रिस्पेक्ट टू t. दिस वेरिएबल इन x वेरिएबल, बट विद रिस्पेक्ट टू t वी आर डिफरेंशिएटिंग, तो dv बाई dt हेयर चेन रूल. तो विद रिस्पेक्ट टू t, derivative of x cube 3x square into derivative of x with respect to t dx by dt. ओके बेटा, चेन रूल लग गया, डन. ये मल्टीप्लाई हो गई, ठीक. अब इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया? यहाँ पर dv by dt गिवन है हमें, यूज दिस. तो गिवन है 8, दिस इज 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर इंटू dx अपॉन dt. नो, व्हाट वी हैव टू फाइंड? इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड surface area, rate of change of surface area, asking that surface area of cube formula. Surface area of a cube. हाँ जी, surface area of cube. 6 सरफेस होते हैं, ऑल आर स्क्वायर. 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर. साइड x मान रखी है तो 6x स्क्वायर. ओके बेटा, दिस इज एरिया, तो लेट इट इज ए. ओके, ए इज इक्वल टू
6x square. Now differentiate. Okay, differentiate with respect to t. Why? Because we have to find how far change. ठीक, यानी rate of change of the area with respect to means time we have to find. So differentiate with respect to t, then it will be dA upon dt. This will be differentiate, तो 2 6 या 12 x, this into with respect to t dx by dt. Understand this? तो put from first dx by dt. तो what is the value of dx by dt in equation 1? dx by dt is equal, this 3x square will go in divide, so 8 upon 3x square. Put this value here, then dA upon dt we have to calculate. This will be equal 12 into x into dx by dt means 8 upon 3x square. This beta. Now simplify. 3 4 the 12 and 1x cancel. So it is 4 8 the 32 upon x. This. Now put here x value, saying in the question when x is, तब हमने उसका rate of change निकालना. Age is 12 centimeter. When age is 12, तो put here 12. So dA upon dt is equal to 32 upon 12. When age is 12, and at x is equal to 12. We are finding this. Okay, 4 3 is 12, 4 8 is 32, means 8 upon 3. This is the rate of change of area. ठीक है बेटा? तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो क्या बना यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. डन. सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. इस रेट में इंक्रीज हो रहा है एरिया. डन. तो लाइक दिस नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वी कैन डू सिमिलरली. ओके, to understand like this application on the derivative, understand how we are finding the change. Rate of change is called the derivative. Easy, differentiate only and find that. ये देखना है कि independent quantity in which respect we are going to find the rate of change. In which respect? That is independent. So now here question 3 you can see the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Radius is increasing. Radius rate given with respect to second 3 centimeter second. So dr upon dt given. Find the rate of which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. Let radius r और r को x मान लो. इंडिपेंडेंट ऑलवेज वी आर टेकिंग x. तो इंडिपेंडेंट है रेडियस है, दैट लेट r. तो क्वेश्चन नंबर 3, लेट radius
ऑफ ए सर्कल। ठीक है बेटा, ये वी शुड राइट let radius of a circle is equal to x centimeter. So area of circle pi x square. ठीक है, and what is given here? dx radius with respect to time. This rate of change of radius given, how much given? 3 centimeter per second. 3 centimeter per second. Understand this. ठीक है बेटा, with respect to this is given. Okay, it means respect to time, differentiate. तो differentiate with respect to time t. ओके बेटा, with respect to t यहाँ differentiate किया, t is time, तो what will be a with respect to time? तो dA by dt is equal to power formula 2 pi x into, because with respect to x नहीं किया, with respect to t time, तो then dx by dt. Understand this thing. Okay बेटा, then this value given, then put this value here. So dA by dt is equal to 2 pi x multiply by dx by dt means multiply by 3. Okay, then it will be 6 pi x. Now here use equation 1. हमने यूज किया गिवन का, यूज 1. ओके, यूज 1 यानी गिवन का यूज किया. देन dA by dt rate of change of the area when the radius is 10 centimeter. तो radius here 10, तो x is equal to 10. x is equal to 10. इस पर हमें कैलकुलेट करना है. सो x here 10 पुट किया, तो 2 pi into 10 means 10 6 जा 60 pi. This is the rate of change of area of circle, means centimeter square area per second. This rate of change of area answer. Now like this question you can do. Okay, next question number 4. Question number 4. What is in NCERT book? Question 4. It is an edge of a variable cube. Variable का मतलब changeable, vary कर रहा है. Cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Whose edge of the variable increasing by the rate? तो let यानी changing कौन
एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, तो एज ऑफ द क्यूब लेट क्वेश्चन नंबर 4 एज ऑफ क्यूब एक्स सेंटीमीटर मान लो, चेंजिंग सेंटीमीटर में है। ओके, क्वेश्चन 4, तो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो व्हाट गिवन dx upon dt as increasing rate of change of the as means rate of change of dx upon dt means this is given 3 centimeter per second. Okay beta, this is given. Now what we have to find, how fast is the volume of the cube increasing, how fast is the volume of increasing, यानी dv by dt we have to find. So volume of cube, volume of cube is equal to, let V formula, volume of cube side power 3, this. Now differentiate with respect to t, because we have to find dv by dt with respect to time. So what will be dv by dt, derivative of v with respect to t, derivative of x cube with respect to t, first power formula and then chain rule, 3x square and into derivative of x with respect to t, it is dx by dt. Now use this equation, then 3x square as it is into dx by dt value given 3, use 1, ओके, इस पर 1 डाल दिया, then 3 3 जा 9, then we have to find rate of change of its volume at age is equal to 10 centimeter. Okay, this is asking at 10 centimeter. So this put here x is equal to 10, then 3 3 is 9 into x is 10 power 2 x square, then 100 into 9, 900 आंसर. ठीक है बेटा, तो 900 सेंटीमीटर इट इज वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके बेटा, you have to write the unit definitely with the rate of change of quantity. Which quantity, what dimension is given according to that. You know volume, cube, cubic unit, then centimeter cube per second. Done. Now like this you can do like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide to them. They must share forward and watch
and subscribe the channel and send the feedbacks in the comment box. Thank you.